Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today we are going to start our new topic which is related to phrases and clauses. Read and write whether the underlying group of words are dependent or independent. ये dependent है या independent है वो आपको यहाँ पर write down करना है. Words और sentences को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, आपको लिखना खुद से है. If the dress is on sale, she will buy it. So long as you know, I will be waiting for you. Whenever you come to visit, make sure to bring food. Until the sunset, I will stay with you. Because he ran, he was able to catch the bus. An independent group of words makes sense on its own, while the dependent group of words cannot stand by itself as a complete sentence. जो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बच्चे वो अपनी कंप्लीट सेंस खुद बना लेते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट जो होते हैं जो किसी ना किसी पर डिपेंड रहने वाले, इंडिपेंडेंट तो खुद करेंगे लेकिन डिपेंडेंट वाले जो ग्रुप होंगे बच्चे वो वर्ड्स होंगे वो कहीं ना कहीं अपने कंप्लीट सेंस के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही एंटर्ड द रूम टू गो टू बेड. सो एंटर्ड, व्हाई एंटर्ड किस लिए किया रूम के अंदर? टू गो टू बेड. He entered the room that he might go to bed. So entered यहाँ पर why? क्योंकि reason दिया है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, इसलिए डिपेंड है. He entered the room बोल दिया लेकिन कंप्लीट करने के लिए सेंस उसको डिपेंड रहना पड़ेगा नेक्स्ट सेंटेंस पर. The two sentences carry identically meaning. In the first sentence the word to go to bed does not contain a subject and its predicate, so it is a phrase. In the second sentence, the words that he might go to bed has a subject of its own, he, and a predicate might go to bed, so it is a clause. तो आप याद रखेंगे यहाँ पर predicate कौन है और clause कौन है. कंपेयर करते हैं यहाँ पर, compare the following groups के बेस पर, group 1 and group 2. I asked him his name. Then I asked him what his name was. The problem was too difficult to solve. The problem was so difficult that it could not be solved. In which group do you think the colored words are phrases? क्या सोच रहे हैं? जो कलर वर्ड है, जो पूरा सेंटेंस यहाँ पर कलर्ड है, तो ये क्या है? फ्रेजेस हैं. तो आप ऐसा सोचते हैं तो फ्रेजेस की डिफाइन आपको पता रहेगी तभी तो आप पता लगा पाएंगे. सो फ्रेज की डिफाइन यहाँ पर करते हैं, रीड आउट बच्चे. A phrase is a logical group of words in a sentence that may work as a noun, adjective, verb, adverb or preposition. It conveys a single meaning but its sense is dependent on the sentence as a whole. It does not contain a finite verb but it can contain a non-finite verb. Read the following sentence. As per the rules, the students in secondary classes have to appear in the board exams. In the sentence, there are 4 groups in which words are grouped logically. So, these are phrases. लॉजिक होना चाहिए बच्चे, अगर लॉजिक नहीं होगा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. तो आप देख रहे हो एज पर द रूल्स, यहाँ तक एक फ्रेज हो गई. द स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी क्लास, यहाँ पर सेकेंड, हैव टू अपीयर इन, यहाँ तक एंड द बोर्ड एग्जाम. तो ये करके क्या है बच्चे, जो 4 फ्रेजेस है वो कंप्लीट ग्रुप बनता है सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का और लॉजिकली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फ्रेजेस. टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. फ्रेजेस कितनी तरह की होती हैं वो रीड आउट करेंगे बच्चे. डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस द फ्रेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. फर्स्ट इज नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस, prepositional phrases. In this class we shall study the first 4 को पढ़ने वाले हम. First is noun phrases. A group of words in a sentence that functions like a noun is called a noun phrases. It may have a noun or pronoun as its main word. For example, the whole class was sitting silently until arrival of the teacher. I entered the barber shop. They are trying to win the trophy. To become a successful man should be our motto. Adjective phrases कौन सी होती है बच्चे? A group of words in a sentence that functions like an adjective is called an adjective phrase. जो adjective की तरह ही function करे उनको ही क्या बोलते हैं? Adjective phrases. Example, the students of this school are playing a game of cricket with the members of Alexander's club.
He is a leader of great qualities. The young man with a red cap is not my friend. The workers were carrying a chest made of leather. Next is verb phrases. A verb phrase contains different forms of verb and functions like a single verb. For example, she is playing a game of Ludo. The must have met you on the road. You will have been digging a pit at this time tomorrow. It has been raining hard. Next is adverb phrases. A group of words in a sentence that functions like an adverb is called a adverb phrases. जो adverb की तरह ही action करे, उसी की तरह functions करे, तो उनको बोलेंगे adverb phrases. For example, she barged into the room all of a sudden. The mountaineers faced all challenges with courage. They walked 20 miles. Will you come tomorrow morning? So इस तरह से आपने सीखा एडवर्ब्स के अलग अलग तरीके, एडजेक्टिव के बेस पर, नाउन के बेस पर, और सभी फ्रेजेस को रीड आउट किया. तो उससे रिलेट करते हुए बच्चे ये एक्सरसाइज भी है, पिक योर ब्रेन, इसको भी कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट इज क्लोजेज. अब क्लोजेज क्या होती है बच्चे? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट ऑफ इट्स ओन. उसका प्रिडिकेट और सब्जेक्ट खुद ही होता है उसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, वी स्टॉप्ड एट द रोड साइड एंड looked at the pedestrians. The sentence is a combination of two sentences joined by and. We stopped at the roadside. We looked at the pedestrians. The word we is the common subject for both clauses. Only their predicates are different. Thus, these are clauses. A clause may have an independent subject too. For example, the news is that our science teacher has retired. In this example, the news and our science teacher function has two independent subject for their respective clauses. दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग सब्जेक्ट हैं. यहाँ पर our science teacher की बात हो रही है और वहाँ पर न्यूज़ की बात हो रही है. ऐसे. Then types of clauses के अंदर there are 3 types of clauses. उससे पहले know the rope में देख लेते हैं. कोई important यहाँ पर है. A predicate should contain a finite main verb to qualify as a clause. Types of clauses के अंदर 3 types of clauses है. फर्स्ट बच्चे प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, देन सबऑर्डिनेट क्लोज. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अभी मेन प्रिंसिपल क्लोज को. अ प्रिंसिपल क्लोज इज द चीफ क्लोज इन द सेंटेंस एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लोज फॉर इट्स मीनिंग. मीनिंग के लिए वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहती. सेकेंड इज कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट करती हुई चलती है. A coordinate clause is an independent clause in a sentence and can express its meaning fully. For example, Ravi is a bowler and Karthik is a batsman. There are 2 clauses in this sentence. Ravi is a bowler and Karthik is a batsman. Both of these clauses have their independent meaning. Only they are joined by and. You can see that both of these clauses have independent meaning, subjects and predicates. The first clause is the principal clause and the second clause is the coordinate clause. Since both of these have independent meaning, we can also say that both of these are coordinate clauses. Look at some more example. I saw the girl who has a golden hair. She spoke to the manager and ordered for 5 pairs of scissors. All children were playing in the park which was newly laid. Don't eat the mangoes which are not ripe. Know the ropes. कोऑर्डिनेट जो क्लोजेज होती हैं बच्चे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइंट होती हैं. एग्जाम्पल के लिए एंड, बट, और, नोर, फॉर, येट, स्टिल, सो, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो एटसेट्रा. इनसे इनको ज्वाइन किया जाता है. लास्ट वन इज सबऑर्डिनेट क्लोज. अ सबऑर्डिनेट क्लोज इज अ क्लोज इन अ सेंटेंस which is dependent upon any other clauses for its meaning. For example, I reached home before the rain started. This sentence has 2 clauses. I reached home before the rain started. तो ये क्या हो गई? Dependent हो गई बच्चे. The first clause has an independent meaning and is not dependent on the other clause for its meaning. So it is the principal clause. However, the second clause जो है बच्चे cannot stand as an independent sentence. So we can say that it has no sense of its own, or that its meaning is dependent upon the other clause for its full meaning.
सो इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज, इसलिए इसको बोलते हैं. लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. I reached the place where my friends were waiting for me. They hired a servant who will take care of the garden. The information that some terrorists have intruded in your territory is already with us. We cannot go until they come back. Know the ropes? A subordinate clause is joined to the principal clause by a subordinating conjunctions के द्वारा इनको join किया जाता है. For example, as, after, before, because, if, when, where, although, though, lest, how, that, till, until, unless, then, since, yet, etc. Pick your brain. ये exercise है बच्चे, करेंगे. Underline clauses the following sentence and write their types. यहाँ पर करेंगे. Next is conditional clauses. Conditional clauses किसको कहते हैं? In a conditional clauses, the fulfillment of a condition depends on the fulfillment of the preposition of the sentence. It may be of two types: open or real condition and hypotheticals or unreal condition. In an open condition, the condition may or may not be fulfilled, and depending on it, the preposition of the sentence may or may not be fulfilled. For example, if Govind seeks my help, I shall give him 500 rupees. Here, Govind may or may not seek help. क्या पता वो उसकी हेल्प करे या ना करे. तो ये तो अलग अलग बातें हो गई. If it is cloudy, he should carry an umbrella. It may or may not be cloudy. क्या पता cloudy हो या ना हो. However, if the speaker thinks that the situation is unlikely or impossible, it becomes a hypothetical conditions and the past tense is used in such sentences. For example, if Govind sought my help, I would give him 500 rupees. It is unlikely that Govind would seek help. तो हमें भी ये नहीं लगता कि वो उसकी हेल्प करेगा. तो इस अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं? इन क्लोजेस को, कंडीशनल क्लोजेस को देखते हैं कि कंडीशन पर अप्लाई करती है कि कंडीशन होगी तब ऐसा हो सकता है. If it were cloudy, he would carry an umbrella. It is almost unlikely or impossible to be cloudy. अब इसमें भी कोई शॉर्ट ही नहीं है क्योंकि कंडीशन पर डिपेंड है बच्चे. If a hypothetical condition sentence pertains to be the past time, it would be formed as follows. If Govind had sought help, I would have given him 500 rupees. This is an unlikely or impossible situation pertaining to the past time. तो यहाँ पर भी impossible situations को वो show कर रहा है. Pick your brain. So यहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर से रिगार्डिंग. तो चैप्टर को थोरोली पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और उससे रिलेट करती जो भी एक्सरसाइज है बच्चे, डू इट योरसेल्फ.